that how to use brackets in writing the formula. So generally we have two conditions to use the bracket. First is when we have a polyatomic ion with the number like carbonate ion, phosphate ion, sulfate ion, and so on. And second condition is that when we have a diatomic ion like hydroxide ion OH minus. Okay, so let us understand this problem with example number 1, that is magnesium hydroxide. So step 1 is, first of all you must find the ions present in the compound. First is magnesium ion Mg2 plus, and second is hydroxide ion OH minus. So you can see that this ion, second ion OH minus, contains two atoms O and H. That's why it is called diatomic ion. Okay. Now the step 2, write the symbol of ions and their charge below their symbols. So magnesium charge +2, hydroxide ion charge -1. So when we changes the charges, they convert into the numbers of the ion. So magnesium ion is 1, hydroxide ion is 2. If we write the formula MgOH2 विदाउट ब्रैकेट, तो हमें इससे क्या मालूम होता है? हमें ऐसा लगता है कि इस कंपाउंड के एक यूनिट में मैग्नीशियम आयन एक है, फिर एक ऑक्सीजन के एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है. So it is not the correct ratio of atoms. So it is a wrong formula. Now what is the correct formula? Write Mg, start the bracket, write OH, close the bracket and then write 2. अब देखिए इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास इस कंपाउंड में मैग्नीशियम का एक आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास 2 है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज ब्रैकेट टू गेट द करेक्ट रेशियो ऑफ आयंस एंड एटम्स. ठीक है, नाउ इन द सेकंड एग्जांपल वी विल टेक सोडियम सल्फेट. अगेन स्टेप 1, find the ions present in the compound. So your first ion is sodium ion Na plus. Then next ion is sulfate ion SO4 2 minus. So because this ion contains total 5 atoms, that's why it is called polyatomic ion. Now in the step 2, write the symbol of the ion and their charge below them. So sodium charge +1, sulfate charge -2. We intercross them, so you will get 2 ions of sodium and 1 ion of sulfate. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करें ना करें. तो एक्चुअली अगर हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो ये तरीका गलत है. ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें उस आयन के लिए नंबर लिखना होता है. ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि सल्फेट का आयन एक ही है, एक से ज़्यादा अगर होते तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं. बट इफ़ वी हैव अ सिंगल पॉलीएटॉमिक आयन, so we will not use the bracket. We will write simple as Na2SO4. Okay, and we can take the third example of magnesium phosphate. इसमें भी सेम है. Step 1, find the ion. Your first ion is magnesium Mg2 plus, phosphate ion PO4 3 minus. ठीक है, again we will write the symbol of the ion and their charges below them. So magnesium 2 plus, phosphate 3 minus, intercross their charges. So now you will get 3 ions of magnesium and 2 ions of phosphate. Now if you write the formula Mg3PO42 without bracket, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैग्नीशियम के 3 एटम हैं, फॉस्फेट 1 है और ऑक्सीजन के 42 एटम हैं. तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका हुआ लिखने का फॉर्मूला. व्हाट इज करेक्ट? राइट Mg3, start the bracket, write PO4, close the bracket and then write 2 outside. अभी हमें करेक्ट रेशियो दे रहा है आयंस का कि इस कंपाउंड के एक यूनिट में 3 मैग्नीशियम आयन होते हैं और 2 फॉस्फेट आयन होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी यूज ब्रैकेट टू गेट द करेक्ट रेशियो ऑफ आयंस. ओके, थैंक यू सो मच.